what are the possibilities when satellite is projected horizontally? What are the possibilities when satellite is projected horizontally from certain height? Projected horizontally from certain height. What are the possibilities when satellite is projected horizontally from certain height? Can I clear this? Because one diagram we have to draw. Yes, sir. Yes, sir. This is Earth. Satellite is projected from certain height above Earth's surface. Then we want to study what are the possibilities. If it is projected with correct velocity means by which it can revolve in circular orbit. So if velocity of projection is equal to critical velocity, then satellite will revolve in circular orbit. Just draw this first diagram. VH equal to VC, it will revolve in circular orbit. First one drawn. Yes, sir. Now when velocity is less than critical, what will happen? Less than critical, then it revolves in elliptical orbit like this, such that Earth is away from point of projection. It appears like elliptical orbit. VH is less than. So we have done 1 and 2 diagram. Completed both? Yes, sir. If VH is greater than critical but less than escape, then it will follow elliptical orbit such that elliptical orbit आप बराबर बनाना थोड़ा, such that Earth becomes closer as compared to this orbit. That is the elliptical orbit. It appears that Earth is closer to point of projection as compared to further point. So this is for the greater than critical but less than escape. Done this 3 diagram? Yes, sir. Then now if it is greater equal to escape, then satellite will try to liberate itself. ऐसा आएगा थोड़ा orbit. In this case,
horizontal velocity is equal to escape. Then last one, suppose it is greater than escape. This equal to escape is called parabola path, and then it escapes. And greater than escape, then it follows curve which is called hyperbola. Hyperbola, where horizontal velocity is greater than escape. So 1, 2, 3, 4, 5 curve we have found. First and third are elliptical, second is circular, then parabola, then hyperbola. Just draw the diagram, then one by one we'll explain. Excuse me, sir. Uh, So actually, I had doubts in the gravitation MCQs. I told no, we'll keep lecture after completing chapter. Okay, sir. Diagram completed? So which chapter? Pardon? Which chapter is this? The same gravitation chapter. You joined late, I think. Yes, sir, because I'm not well. That's fine. No problem. Heading is possibilities when satellite is projected horizontally. Okay. Then in explanation, I will again explain how the curves are. Okay, sir. Can I clear the diagram part? Yes, sir. Okay. अभी देखो दो चीज जरा नया है वो खाली ध्यान दे दो फिर बाकी तो इजी है. Suppose this is ellipse and here is earth. That means from this point of projection it is away or close? Away. Away. Away is called as apogee. What is name of this part? Apogee. Apogee. So point of projection is called apogee. Apogee दूर है ना, दूर वाले से मांग रहे हैं. Apogee दूर हो गया है. But if this is the ellipse and here is earth, now it is close to the point of projection from the further end. Close, na? Yes, sir. So when it is Yes, close sir. to the earth, that point of projection, then it is called perigee. दूर वाले से मांग रहे हैं अपोजी, नजदीक वाला क्या है परिजी. अपने लिए परी हो गया, वो नजदीक से दिख रहा है. दूर वाला अपोजी, पेरिजी. So far is which point? Apogee. Near is which? Hello, far point is which one? Perigee. हाँ, yes. Apogee. हाँ, apogee. Okay. अभी लाइन से जाते हैं. So, there are 5 different possibilities. There are 5 different possibilities when satellite from certain height is projected horizontally. First one, horizontal velocity is less than critical. First case, case 1. If horizontal velocity VH is less than critical. तो apogee क्या perigee? Horizontal velocity less than critical, then it is apogee वाला case. हाँ? Yes, sir. हाँ. Then the orbit of satellite is an ellipse. Orbit of satellite is an ellipse, not circle. चलो इतना लिखो फिर रब करके लिखता हूँ.
then orbit of satellite is ellipse. If the horizontal velocity Vh is less than critical, then orbit of satellite is an ellipse with point of projection as apogee. That means farthest from Earth. And Earth is at one of the foci. मतलब देखो ऐसा है, the point of projection is far from Earth and Earth appears like one of the focus. Then first one. Yes, sir. Second case, case 2, VH equal to VC. If the horizontal velocity of projection is equal to critical velocity, then satellite revolves in circular orbit. Revolves in circular orbit. Case 3. Horizontal is greater than critical but less than escape. Sir, Yes. sir, if horizontal velocity is smaller than critical velocity, then it will be closer to the Earth now. The satellite will move in elliptical orbit such that this point of projection is away from the earth. ऐसा सैटेलाइट तो एक बार अर्थ के नजदीक होगा, एक बार दूर होगा ना इलिप्स में. Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसका बात कर रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट का नहीं. Understood, sir. अर्थ से दूर है, उसको हम बोलते हैं अपोजी वाला पोजीशन. क्लियर? Yes, sir, understood. When third case, if the horizontal velocity, if the horizontal velocity is greater than critical velocity but less than escape velocity,
then the satellite again moves in elliptical orbit with point of projection close to Earth, called as perigee. Means this is elliptical orbit, Earth appears here, इधर ellipse ज्यादा हो जाता है, so point of projection is close to the Earth, called as perigee. पहले वाले में क्या था, point of projection is Earth इधर, away from the Earth, ये मेरी, ठीक है. Can I clear this point also? Yes, sir. Case 4, fourth case. Horizontal velocity equal to escape. If horizontal velocity is equal to escape velocity, then satellite travels along parabolic path, and never returns to the point of projection. Its speed becomes 0 at infinity. That means its entire energy is utilized to overcome gravitational pull. Speed becomes 0 at infinity. Yes, shall I clear now? One more point left out. Yes, sir. Case 5. Horizontal velocity is greater than escape. If horizontal velocity is greater than the escape, then satellite removes itself from gravitational influence of Earth, traveling in hyperbolic path. You are going to study what is hyperbola, parabola in 12th in maths. So this completes our launching of satellite and 5 possibilities. One small part, feeling of weightlessness. I'm explaining the theory. Write up part you can see from the notes which I have given. Yes, sir. Because total theory is the time waste nahi karunga. New chapter, then we'll start.
explain feeling of weightlessness in spaceship, or they can say explain of feeling of weightlessness by astronaut in spaceship. So first I'm explaining what is meaning of weight and why there will be then weightlessness. See, when you stand on the surface of earth, then we give action to this mg, Yes, sir. and earth offers reaction. Yes, sir. So due to this person feels weight, मतलब रिएक्शन की वजह से उसको वेट फील होता है. That means if there is no reaction, there can't be any weight. मतलब मेरा पैर अगर उठ गया अर्थ से तो वेट नहीं फील कर पाऊंगा मैं. So imagine a person is standing in a lift at rest. Lift will offer reaction mg, hence he feels actual weight. मतलब लिफ्ट अगर ग्राउंड फ्लोर पे एट स्टेशनरी पोजीशन पे है एंड यू गो इनसाइड, तो आपको अपना वजन खुद का लगता है कि बाजू वाले का वजन लगता है? खुद का ही लगेगा ना. लेकिन when lift starts moving up with acceleration a, so man is getting reaction mg plus this ma वाला पुल भी, तो ऊपर जाते समय वजन ज्यादा लगता है ना. Yes, sir. So apparent weight is mg plus ma, which is greater than actual weight. Not followed? Followed, sir. But when lift is descending down, then apparent weight will be that reaction wala minus ma. So he feels apparent weight is less than actual weight. Yes, sir. And when somebody cuts the rope of lift, then he will fall with acceleration due to gravity. Yes, sir. Now apparent weight will be mg minus mg. Person will feel what? Weightlessness. ये आपको सेम मैंने लॉ ऑफ मोशन में बताया था, वेटलेसनेस है ना. Yes, sir. और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा नीचे आया तो उसका पैर छूट जाएगा, नो रिएक्शन, ऊपर फ्लोट होएगा और ऊपर फ्लोर से टकराएगा. बराबर? Yes, sir. नाउ इन स्पेसशिप, which is orbiting around the earth, there is no gravitational influence of the earth. That means there is no reaction offered by the person he is floating. So in spaceship, there is no reaction offered by the spaceship because he is not in contact. Therefore, he feels weightlessness. Clear? Hello? Yes, sir. So this completes our chapter called gravitation completely. Sir, can you once repeat the statement in spaceship which is orbiting around Earth? In a spaceship, the satellite, ये spaceship है suppose, ये astronaut है. In a spaceship, the satellite is not giving any reaction क्योंकि ये contact में नहीं होता है ना, ये भी gravity Yes, से sir. घूम रहा है, तो there is no reaction, hence he feels weightlessness. जब Yes, sir. reaction आएगा mg और mg minus ma और mg plus ma, तभी तो weight लगेगा ना उसको. तो ये कांटेक्ट में नहीं है सरफेस से, तो ही फील्स वेटलेसनेस. ओके, Yes, sir. नाउ वी आर गोइंग टू न्यू चैप्टर कॉल्ड मैकेनिकल, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ सिलेबस है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. In any college they started this chapter, mechanical properties of solid? Hello, is it started in the college, this chapter? No, sir. Not yet. Even Mayank, in your college, Mayank? Sir, they have finished this chapter. They are on this mechanical property of fluids. हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, उन्होंने मतलब मैं जितने दिन लीव पे था उतने में उन्होंने खत्म कर दिया. मतलब खत्म कर दिया, उड़ा दिया, मतलब ऐसा हो गया? हाँ सर. अरे बाप रे, अभी तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखना है टू सॉल्व द डाउट ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी रखना पड़ेगा.
बट आप टेंशन मत लो, कॉलेज वाला कभी कभी भागता है बहुत फास्ट. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सी व्हेनेवर वी से मैकेनिक्स और मैकेनिकल, ध्रुव व्हाट डज इट मीन? मूविंग क्या रेस्ट? मूविंग सर. हाँ, जिसमें फोर्स बैठता है ना उसको मैकेनिकल बोलते हैं हम लोग. और फोर्स बैठा बॉडी नहीं मूव हुआ तो स्टैटिक बोलते हैं, और फोर्स बैठ के मूव हुआ तो उसको डायनेमिक बोलते हैं. एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल. एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल. Yes, sir. ये एटम्स मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बिकॉज दे आर इनटू वाइब्रेटरी मोशन. Yes, sir. तो इसका प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. नाउ इमेजिन दिस इज वन रबर कॉर्ड. I suspend it on from free end of the rigid support. इधर वजन लगा दिया, क्या होगा? इलोंगेट होगा ना ये? Yes, sir. और ये वजन हाँ इलोंगेट होगा ना, थोड़ा बढ़ जाएगा ना साइज. Yes. So this external force is called deforming force. If I remove this load, what will happen? If I remove, it will again come back to the original ना? Sir, yes, sir. अभी फिर से पीछे लाने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए ना. वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल restoring force, which will be always equal to deforming force. कभी कभी देखो दो लोग फाइटिंग करते हैं, खाली आपस में ऐसे बोलते हैं अरे दिखाओ क्या, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है ना. हेलो. Yes, sir. क्योंकि Yes. वो डरता है सेकंड वाला मजबूत है क्या मालूम नहीं, बजा दिया तो खाली ऐसे मुंबई का लैंग्वेज बोलते हैं हुल देते रहता है. सुना ऐसा मुंबई में बोलते हैं हुल Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ऐसे खाली उसको डराते रहता है. और जैसे ही ये चला गया ये बेचारा सांस लेगा, रे अच्छा हो गया. तो इंटरनल रिस्टोरिंग हमेशा नहीं आता है, जरूरत पड़ने पे आएगा और उसका एक लिमिट रहता है, उसके बाद नहीं आएगा. लाइक सपोज ये एक घर है, 5 people आर स्टेइंग टुगेदर इन दिस हाउस. एक एक्सटर्नल फोर्स आया डिफॉर्मिंग जो इनको डिस्टर्ब करता है, बोलता है बाहर निकल. सब निकलेंगे क्या एक साथ बाहर? एक बोला, सब नहीं लोग को sir. बोला जरा तू जाके देख ना किसका पेट दुख रहा है यार. तो ये जैसे आया बाहर, देखा ये मजबूत दिख रहा है, बोला बचाओ. फिर दूसरा वाला बाहर आया, ये दोनों को देख के इसने बोला बचाओ, एक्सटर्नल और भी आया. तो इंटरनल बोला बचाओ, इसका भी और भी आया, इसका फिर से एक और आया. अभी इसके सब बाहर आ गए. तो ये लोग ने देखा डिफॉर्मिंग बहुत ज्यादा है, बोला बचाओ मत भागो. मतलब इंटरनल स्लोली इट विल इंक्रीज बट नॉट बियॉन्ड सर्टन लिमिट. एवरी टाइम इट इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू सर्टन लिमिट. क्लियर? Yes, sir. मतलब मैंने आपको बोला एक चैप्टर का टेस्ट है, तो आप एक चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे ना. 2 चैप्टर का Yes, टेस्ट sir. तो 2 चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे. 10 चैप्टर का टेस्ट रखा, आपने फोन कर दिया सर मेरा तबियत खराब है. मतलब एक लिमिट तक आप संभाल सकते हैं ना, उसके बाद आपका भी माइंड आउट हो जाएगा क्या नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स एक साथ बाहर आएगा क्या स्लो आएगा? Slow आएगा. इंडेफिनेट आएगा क्या लिमिट में आएगा? Definite. डेफिनेट. ओके. अब ये इंटरनल फोर्स क्या करता है? बॉडी को अपना जगह पे लेके जाता है. क्या करता है? अपने जगह पे लेके जाते. So this property of bringing body back to the original position, नाम सुना है इसका? नाम सुना है ये क्वांटिटी का? नहीं. इलास्टिसिटी. इसको ही क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी. नहीं समझ में आया लगता है. Yes, sir. Yes, sir. So the property by virtue of which the body regains its original shape or size or both is called as elasticity. City. हाँ, सिटी नहीं इलास्टिसिटी. तो Yes, इलास्टिसिटी sir. में Elasticity. हाँ, जो ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं ज्यादा इलास्टिक. अभी आप एक कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है. दिस इज वन बॉडी, I said made up of rubber earlier, now also rubber, same length wala body but steel.
I want to elongate both by 2 centimeter. ये 2 kgs अप्लाई किया तो elongate हो गया 2 centimeter. Steel will also elongate by 2 centimeter with 2 kg only. No, sir. No, it may require 2000 kg suppose. Yes, sir. So when I remove 2000, what is internal restoring force developed? Equivalent to 2000 ना into 9.8 क्या तो न्यूटन हो जाएगा बराबर. When I remove 2 तो ये 2 into 9.8 internal develop किया बराबर क्या नहीं. Yes, sir. So both will come back by 2, but who will be coming back with more internal restoring force? Steel. Therefore we say steel is more elastic. मतलब ऐसा नहीं कि elongate हुआ तो elastic है, oppose किया तो ज्यादा elastic है. So एक और definition I have created. Elasticity is opposition of deformation. ठीक है? Yes, sir. Okay. चलो write down. Define elasticity. Chapter is simple. इसके अंदर friction भी है, that already I have done for you. Define elasticity. The property by virtue of which, Amay, in your college they have done this chapter, no? I think gas wala, na? Yes, sir. Gas. Thermal properties they have started. Okay. पूरा कर दिया क्या कि नहीं तो आपको सेपरेट सिखा देता हूँ. Full they have, नहीं सर, एक्चुअली हमारा स्कूल भी तो लाइक अभी हमारे टेस्ट चालू थे तो अभी आज खत्म हुआ तो कल से वापस चालू करेंगे. कौन सा चैप्टर था उसमें? सॉरी In that test, which chapter you had? सर मैं कॉम्प्रिहेंसिव लाइक अभी तक जितना भी था सब कुछ का टेस्ट था. अच्छा, so you could attempt it well? या सर. Okay. The property, then I'm going in sequence. If your exam date is announced now and we have not reached to that chapter, I will take extra for you. ओके सर. The property by virtue of which a body regains its, the property by virtue of which body regains its original shape or size or both is called as elasticity. Is called as elasticity. Or the opposition to deformation is called as elasticity. Opposition to deformation is called as elasticity. Note, write down. Steel is more elastic than rubber. Done then? Done, sir. Okay, completed, na? Yes, sir. Yes, sir. Distinguish between elastic and
Plastic bodies. Elastic bodies. Here, plastic bodies. First point, it opposes deformation. It does not opposes deformation. Second, it produces restoring force. It does not produces restoring force. Third, it gets temporarily deformed. Elastic bodies gets temporarily deformed. Here, it gets permanently deformed. It gets permanently deformed. हेलो, हाँ भाई, अभी कुछ आया नहीं होगा ना अपना? हाँ, वो निकाल के ना ये लेना है फिर अपने को 80 फाइनेंस। हाँ, ले लो जरा। कितना आ सकता है? देखते हैं 500 आ रहा है क्या? नहीं, नहीं बैठेगा पैसा 45 में, तो मैं डाल दूंगा शाम तक। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। 1000 ले। अच्छा, अच्छा ठीक है, 500 आ गया। ठीक है, ठीक है। हेलो, या फोर्थ पॉइंट, Yes, sir. हाँ, फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल रबर, स्टील, etc. And in case of plastic body, write down clay, comma mud, etc. मतलब एक बार ये डिफॉर्म हो गया तो फिर से बनता नहीं। Done. So can you repeat the examples? First one was rubber. For elastic body, rubber, comma steel, comma copper. And for plastic, clay, comma mud. Thank you. Okay. Next, right? Stress. Have you heard about this English word, stress? Yes, sir. When you get stressed,
Sir, when homework is very much. अच्छा, when the situation is out of control. ओ अच्छा, मतलब अगर आउटसाइडर्स आ गए घर पे बिन बुलाए मेहमान तो भी स्ट्रेस आ जाता है ना, मस्तीखोर बच्चे लोग आ गए तो। हाँ, कोई तो बोला होमवर्क बहुत होता है तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है, तो बाजू वाले से करा लेने का ना, क्या टेंशन है। अनमोल कोई फ्रेंड नहीं आजू बाजू में आपका? नहीं है ना सर, अरे इसीलिए। अरे बनाओ पूरा होमवर्क उससे ही कराने का, खुद पढ़ाई करने। खाली कॉपी वाला काम रहेगा तो उसको बोलो तो चॉकलेट ले लिख दे पूरा, नहीं तो मम्मी डैडी को बोलो लिखने को। जर्नल कंप्लीशन, जिधर भी आपको दिमाग यूज नहीं करना है ना, वो दूसरे से करा लो। एग्जाम नजदीक आता है तो भी आता है ना स्ट्रेस। यस सर। ये स्ट्रेस एग्जाम नजदीक आया तो आता है, मतलब क्या होता है, आपको भूख लगता है बहुत, नहीं सर। तो जनरली हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस आया, तो कोई कोई बोलता है बहुत सर दुख रहा है ना स्ट्रेस आया यस सर। तो सर दुख रहा है मतलब ये अंदर से दुख रहा है क्या बाहर से दुख रहा दोनों जगह से सर। है? नहीं, इंटरनल पेन होता है ना, इंटरनल कोई तो खींच रहा है ना, ऐसा लगता है। यस सर। और बॉम्बे में कोई नया नया लैंग्वेज है, वो बोलता है अरे क्या दिमाग का दही हो गया यार, मतलब अंदर ही अंदर कुछ तो खींच रहा है ऐसा, तो ये इंटरनल। यस सर। So I can say stress means the internal restoring force, the internal restoring force acting per unit area is called as stress. Okay, what is stress? Internal restoring force acting per unit area. Hello? yes, sir. यस सर। Stress is internal restoring force upon area. What will be its SI unit? Newton per meter square. This year in NEET Yes. they has asked. Huh? What will be its dimension? Can anybody tell? Its dimension? M1, L minus 1, T minus 2. See how I did. Force is M1, L1, T minus 2. Area is L2. So M1, L minus 1, T minus 2 is dimension. Okay? Hello? Yes. Yeah. Please write. Internal restoring force acting per unit area is called as stress. Sir, is हाँ? it सर डायमेंशन का तो m1 l1 t पावर -2 होना चाहिए ना? नहीं, नीचे एरिया है ना L2, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना। ओके ओके, देखो फोर्स है M1, L1, T minus 2 अपॉन एरिया L2, 2 ऊपर गया तो -2, 1 minus 2 is -1, है ना। यस सर. Yes, we are done. Done? Next, right? Define strain. Define strain. See, whenever a person is stressful, from the face we can make out. Either his face becomes tanned, और पतला हो जाता है वो, और बार बार नींद आता है, मतलब कुछ तो उसका
फीचर्स में चेंजेस आते हैं. सो दिस रेशियो कंपैरिजन से, मतलब जो पहले देखा रहेगा और बाद में देख के कंपेयर करेगा तो बोलेगा ना स्ट्रेस है क्या नहीं है. हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Somebody has observed you in 10th and then he comes again in 12th. 10th के हिसाब से अगर बहुत पतले हो गए तो बोलेगा लगता है बहुत पढ़ाई चालू है, स्ट्रेस है. तो कंपेयर कर रहे हैं ना आपको 10th के हिसाब से या तो 12th में. Yes, sir. तो कंपैरिजन इज स्ट्रेन. द रेशियो ऑफ change in dimension to the original dimension, ratio of change in dimension to the original dimension is called as strain. अभी ratio of similar quantity, dimension, so it will be unitless or not. Yes, sir. Yes, sir. अगर यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी है. सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नो यूनिट, नो डायमेंशन. Dimension. Therefore, strain is given by ratio of change in dimension upon original dimension. So depending upon which dimension, that means length, breadth, area, we are having different types of strain. Have you followed this? The Yes, sir. ratio of change in dimension to the original dimension is called as strain because it is ratio of two similar quantities. Therefore, it is unitless, and if no unit, no dimension. Copy. Yes, sir. Then. Can I clear now, full? Can I clear this? Yes. Next topic. Types of stress. Types of stress. Types of stress. There are three types of stress. There are three types of stress. First, longitudinal or tensile stress. See, we say internal restoring force. That force can act like this also, it can be like this also, कैसे भी हो सकता है ना. But if the force is acting perpendicular like this, perpendicular, then it will elongate length, na? So the force which is acting along the length, that means it is internal restoring force acting normally to the surface, normal, perpendicular.
is called longitudinal or tensile. Not followed, I think. If this is length of the body, deforming force is increasing length. So when you remove, internal force will again produce force perpendicular to the area, na? That means along the length, parallel to the length, correct? Yes, sir. That type of force acting per unit area is called as longitudinal or tensile. The force which changes length is called the force which changes the stress. Stress which changes length is called as longitudinal or tensile stress. It is defined as internal restoring force acting normally, internal restoring force acting normally per unit area is called as longitudinal or tensile stress. Agreed? Followed this much? Yes, sir. Okay, okay, right. Copy for. There are three types of stress. First is longitudinal or tensile. The stress which changes length is called as longitudinal or tensile. It is defined as internal restoring force acting normally per unit area. खाली इतने ही लिखो कि it is defined as लिख क्या है. Can I clear this? एक formula लिखता हूँ, then we'll stop. Therefore, longitudinal stress equals to normal force upon area. See, suppose this is one pillar. This way force is acting. Will this create longitudinal stress? Yes, sir. No. इसका कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो क्रिएट करेगा ना, मतलब एफ कॉस थीटा, बराबर ना? कोई Yes, भी sir. फोर्स मत, कोई भी फोर्स मत लेना, नॉर्मल करना है अपने को, नॉर्मल. तो ये इंक्लाइंड है तो नॉर्मल क्या होएगा, कंपोनेंट होएगा ना. Yes, sir. तो ये एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया बन जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. नहीं समझ में आया? समझा सर. अभी इधर मैंने बॉडी वजन 5 किलो का रखा, ये तो परपेंडिकुलर एक्ट होता है, तो ये 5 विल क्रिएट मी नॉर्मल फोर्स. लेकिन अगर मैंने इधर वजन रखा ऐसे, तो ये कंपोनेंट विल बी नॉर्मल फोर्स. गॉट इट? हेलो अनमोल, Yes, sir. समझ गया आपको कॉन्सेप्ट?
Yes sir, समझ गया. ठीक है सब लोग लिखो. Longitudinal stress is normal force upon area. Nija, can I keep extra class on Saturday? Yes, sir. Saturday what time? Let us discuss. Everybody is free at what time? Because that doubt will be common to everybody, I think. Hello? Hello? Yes sir. Can I keep at 8:30 doubt solving of gravitation ka? 8:30 Yes sir. evening? Sir, Yes, sir, sir, wait. 8:30 evening. Yes sir. Yes sir. Sir, I have my class. Evening, Nija, evening. Yes, sir. Evening, Saturday evening, I have class. Arre. Till what time you have class? 8:45. Then can you keep it at 9? I can keep at 9. 9 everybody will be waking up. Sir, सब लोग. Yes sir. So 9 o'clock on Saturday gravitation का doubt. morning. नहीं, evening. Sir, you Late. keep it on Thursday. You keep it on Thursday. Thursday. Yes, sir. ये इधर उपास है क्या आपका मयंक? नहीं. ये तो हनुमान जयंती है उपास. Thursday also I can keep. Thursday चलेगा others को? 9 o'clock. Yes sir. Yes, sir. 9 o'clock. हाँ, evening 9 o'clock Thursday. Done. Oh. Yes, sir. See, Thursday is tomorrow only, not अगला Thursday. Yes sir. Okay. So tomorrow 9 Okay, o'clock sir. extra lecture for gravitation doubt solving. Yes, sir. Thank you. Okay. Yes sir. Okay. Bye. Bye sir. Bye. Welcome. Take care.